let down come down to civil liability. Civil liability are definitely a liability where the question of compensation comes, where the monetary loss is there. Monetary loss का मतलब क्या हो गया कि if matter goes to consumer fora or if matter goes to civil court for under the law of torts. तो दोनों जगह पे मेरे पास दोनों केसेस है जहां 80 लाख का क्लेम एक एमडी मेडिसिन के ऊपर फाइल किया गया था. चूंकि लिमिटेशन एक्ट 2 साल का सिविल कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में होता है, 2 साल जा चुके थे, द कंप्लेनेंट हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द डॉक्टर इन अ सिविल कोर्ट बिकॉज वहां लिमिटेशन पीरियड 3 years का है. आई हैव गॉट अ मल्टीपल केसेस वेयर ओनली टू डिफेम अ डॉक्टर द क्लेम ऑफ 1 rupee हैज बीन आस्क्ड एज अ कंपनसेशन, क्योंकि वहां कोर्ट फी भरनी पड़ती है टू अवॉइड दैट कोर्ट फी. बट इफ इट ऑल डॉक्टर are held to be liable in a medical negligence, there is going to be defamation to the doctor. So ऐसे कई cases civil court के हैं, but majority of cases of 95% are going to go to consumer fora. अब consumer fora की जब मैं बात करूँ तो either liability is going to vicarious for the hospital people, the nursing home. अब हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे आप तो because of the judgment, lots of hue and cry has happened and lots of sadmas are there on a hospital. मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे से प्रैक्टिकली पूछोगे तो लायबिलिटी हमारे यहाँ नर्सिंग होम की कुछ ज्यादा ही है. भले वो नॉन मेडिको ओनर हो, भले वो मेडिकल ओनर हो, भले वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पेशेंट से, देन ऑल्सो इफ एनी कंसल्टेंट विजिटिंग कंसल्टेंट हैज ट्रीटेड द पेशेंट एंड डेथ हैज हैपेंड, द लायबिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल आर गोइंग टू बी ह्यूज अंडर द कंज्यूमर फोरा एक्ट, अंडर द वेरियस जजमेंट ऑफ दिस कंट्री. और ये सब कब हुआ? क्योंकि बहुत सारे जजमेंट जहां हायर कंपनसेशन दिया गया है हमारे कंट्री में, वेरी हायर कंपनसेशन दिया गया है, वी हैव फाउंड दैट द काउंसिल हैज सबमिटेड अ ग्रेट अगोनी टू द कोर्ट. मैं अगर आपको बताऊं एएमआरआई के जजमेंट में जहां 11 crore प्लस कंपनसेशन फर्स्ट टाइम हैव बीन गिवन बाय हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस कंट्री, वेयर 100 crore was demanded by the patient in a Stephen Johnson reaction death of a patient. Supreme Court, after hearing all the judgment, has given a judgment of giving 6 crore plus interest. उस केस के अंदर अगर आप जजमेंट को पढ़ोगे तो बहुत जगह पे सुप्रीम कोर्ट, हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट has said categorically about various things, where they said the human life cannot be compensated with any amount of money. And not only in that case, but other cases also, the senior consuls who has represented a doctor has submitted to the court that in a corporate hospital, in a cranial surgery, where bill is of 4 to 5 lakhs rupees, the neurosurgeon who does the surgery gets only 20,000 rupees. Means that the share which doctor gets is a peanut, and the profit of the hospital is huge. So whenever the question of compensation comes, the ratio should be same. And thereafter, in that case, compensation, while giving a compensation, Honorable Supreme Court has said 10 lakhs rupees to be paid by the treating doctor, and remaining should be beared by the hospital. Now it become a precedent in this country. आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछोगे तो vicarious liability is huge on hospital, on huge on nursing home. नर्सिंग होम के ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी है. किसी भी केसेस के अंदर 90% तक की लायबिलिटी आपकी आती है, क्योंकि यू सप्लाई अ पैरामेडिकल स्टाफ, you supply all the instrument, you supply all the facilities. Treating doctor as a visiting consultant comes and does their job and goes away. Or you being a treating doctor also, you do your job. But all these things, all these factors have been supplied by them. So definitely liabilities are going to be huge. Consumer Fora Act, friend, has got a new version after 2019 Act got executed in 20th July 2020 in this country. It has not only opened the door for medical negligence, but opened the door for every aspect to be considered under the liability. अब मैं नर्सिंग होम के लिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट करके चैप्टर दिया है सीपीए एक्ट के अंदर 2019 में, जहां फर्स्ट टाइम लॉ मेकर हैज थॉट दैट ऑल द मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ऑल द एम्बिग्यूअस एडवर्टाइजमेंट और द इनकरेक्ट और ल्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट शुड बी कर्ब्ड. टिल डेट क्या होता था कि since doctor are not allowed to do advertisement, they come under unethical practice, and medical council was there as a body to regulate that thing. The advertisement was not done by the doctor individually, but advertisement was done by hospital across the country. We have seen medical center across the country. We have seen कि भाई लीवर ट्रांसप्लांट हो गया या नी रिप्लेसमेंट हो गया, तो जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है,
they are giving the advertisement. छोटे हॉस्पिटल है, they are giving कि we have got such a consultant, we have got such facilities, hair transplant हो गया, cosmetic surgery होगी. आप सोशल मीडिया में जाके देखिए, आप प्रिंट मीडिया में जाके देखिए, everywhere. I'll give a very simple example. आपका जो फाइल रहती है, फाइल, if you have made a file of your hospital, अमुक अमुक hospital, and the back side of the hospital you write about the facilities. 24/7 medical facilities available, 24/7 medical stores are available. बहुत सारी चीजें लिखते हैं. That also comes under the advertisement. Any printing thing comes under advertisement. आपके लेटर हेड पे बहुत सारी चीजें आप लिख डालते हो. Attached to this, attached to that, this thing, that thing, that thing. That's also comes under advertisement. So advertisement has been very seriously taken by new law. And एक बहुत important point आप लोगों को बता दूं कि ये CPA Act 2019 is a consumer oriented act. इसके अंदर बहुत variations हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है कि अर्लियर द कंप्लेनेंट हु केम एंड पेड यू एज अ कंसिडरेशन सम अमाउंट फॉर द ट्रीटमेंट वाज ओनली अलाउड टू फाइल अ कंप्लेन. आपका पेशेंट ही खाली कंप्लेन कर सकता था क्योंकि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन यू एंड पेशेंट. लेकिन नया लॉ क्या बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट 139 crore population can file a case. Listen me again. For the purpose of advertisement, they need not be your patient. They need not have any relation with you. Sitting here in Mumbai, if I found any advertisement of Delhi or Mathura, which is not as per the law of the land, I can also just mail to the CCPA, Consumer Protection Council को CPA को मुझे सिर्फ एक मेल डालना है. That's all. And then investigation starts, punishment starts, everything starts. So any rival or any person created by a rival, any antisocial activist, any extortionist, or any watchdog people, a whistleblower can be a dangerous to us. Because now hospitals are doing lots of advertisement, and if the advertisement is misleading, is ambiguous, or can be luring, then you are going to be liable, friend. Let me give an example to make you understand what I mean to say. Offering 100% result in a replacement, knee replacement, or any of the procedure, or up to 80% discount, up to word I'm using, up to, or you are giving just discount of 30%, is ambiguous. अगर आप 80 लिख रहे हो तो 80 जैसे मेडिकल स्टोर वाले लिखते हैं, that is definitely be actionable. Then anything you are writing on your letterhead is going to be advertisement. So my friend, advertisement, if at all found to be a misleading, the first penalty under the CPA Act 2019 is 10 lakh rupees. 10 lakh rupees. Second penalty is of 50 lakhs rupees, and then followed by jail punishment. So my friend, now advertisement done by nursing home is very strictly taken under the law. We need to be very careful. It's not that you cannot do advertisement. You are free to give advertisement. But only thing that what word you are using, you need to be very careful. How people are going to take, what way your people are going to take. भाई किसी को तकलीफ देना ही है आपको, तो वो तकलीफ देने वाले बहुत पैदा हो जाते हैं. जब लोगों को लॉ पता चलने लग जाएगा, इसका अवेयरनेस होने लग जाएगा, तो हमारे राइवल ही हमको तकलीफ देंगे और हम लिटिगेशन में रह जाएंगे. My friend, my humble request that you should be very careful when you are advertising. CPA Act 2019 के अंदर दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है. वो बदलाव क्या है? That patient can file complaint where he reside or work for the gain. Now, sitting at Mathura, if you got a patient from Delhi, or you got a patient from Agra per se, or any other district per se, you have treated the patient at Mathura, the patient has got all the right to file a case where he resides. तो कोई उड़ीसा का पेशेंट आपके पास वहां आ जाए, वो टूरिस्ट होगा मथुरा का, और उसको कुछ हो गया और आपके यहाँ आके एडमिट हो गया, या तमिलनाडु को आ जाए या मुंबई का ही आ जाए, और उसको अगर कंप्लेंट फाइल करना है आपके अगेंस्ट में, तो पहला जुरिडिक्शन क्या था? वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइज. अभी नया जुरिडिक्शन क्या है? वेयर ही रिसाइड और वर्क फॉर द गेन. सो कंप्लेंट कैन गो अक्रॉस द कंट्री. नाउ वी नीड टू हैव एडवोकेट्स अक्रॉस द कंट्री. वी शुड बी डिफेंडेड बाय गुड लॉयर अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज नाउ लिटिगेशन, टेलीमेडिसिन में भी अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि आप टेलीमेडिसिन में मथुरा में बैठ के मुंबई के पेशेंट देख सकते हो, तमिलनाडु के पेशेंट देख सकते हो, महाराष्ट्र के देख सकते हो, ओडिशा के देख सकते हो, आसाम के देख सकते हो. तो नेचुरली इन टेलीमेडिसिन अगेन द लायबिलिटी इज गोइंग टू बी ऑल इंडिया.
and same applies to the liability across the country for any treatment done in person. So my friend, you need to have a great defense in any of the consumer cases. लॉ क्या बोलता है? The Honorable Supreme Court का लॉ ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि all type of simple negligence will going to go to the going to go to consumer for us. Gross negligence में ही criminal liability first and होनी चाहिए. तो मतलब कोई भी frivolous केस फाइल कर सकता है. And that to be फ्रिवलस केस का मतलब क्या हुआ कि आप केस तो 100% जीतोगे, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर यू अंडरस्टैंड कि फालतू केस किया तो जीतने वाले हो, लेकिन लीगल फीस, केस तो जीतना है, लेकिन वो 2 साल अगर केस चल गया तो 2 लाख रुपए तो लीगल फीस चली जाती है, लाख रुपए तो कम से कम जाती है. बहुत सिंपल एडवोकेट भी करोगे तो 50,000 रुपए तो जानी है आपकी लीगल फीस. एंड अभी अक्रॉस द कंट्री आई विल गिव एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से विद अ फ्रिवलस केस. आई गॉट अ केस where this physician has treated a patient for upper respiratory tract infection, URTI, running nose, watery eye, earache, body pain, fever. He has given a treatment to the patient. Patient was absolutely fine within 5 days. Blessed the doctor. 7th day, fallen at home, taken to corporate hospital where she died after 8 hours of treatment. During the treatment, all sort of investigation was done and death was confirmed that she died because of acute MI, acute myocardial infarction. Even the postmortem was done in that patient, which confirmed the cause of death as a MI. लेकिन वो पेशेंट के रिलेटिव ने गूगल पे से इंफॉर्मेशन निकाला और उसने 1.5 करोड़ का केस फाइल किया नेशनल कमीशन में. और नेशनल कमीशन में उसने क्या कहा कि ईयर एक मिमिक्स जॉ पेन. Jaw pain is a sign of cardiac element, and the workup of cardiac was not done by my wife has gone to this doctor 7 days back. Is deficiency in service. Being a doctor, you will understand that ऊपर से नीचे तक, toe तक, head to toe, we are connected. So anything can be connected and filed in a court of law. Frivolous case था. I argued the matter. I got a judgment in favor of a patient. Sorry, in favor of a doctor. Patient was penalized for 10,000 rupees for filing a frivolous case. But legal fees तो देना पड़ा ना. So legal fees plays very vital role. Case को represent करना is a third important aspect. My friend, सबसे बड़ा डिफेंस मेडिकल नेग्लिजेंस में यही है कि you need to have a good advocate who presents you. I definitely say my advocates are very good, but my advocates struggle with the medical terminology. उनको एस्पेक्सिया और हाइपोक्सिया समझाना होता है, उनको न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी समझानी पड़ती है. और सबसे बड़ा हर्डल मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में जो मैंने अनुभव किया पिछले 16 सालों में, वो ये है कि हमारे डॉक्टर के पास टाइम नहीं रहता, अपने ही केस के लिए टाइम नहीं रहता. एडवोकेट भी बिजी रहता है, दोनों इगोइस्टिक हैं, दोनों एक दूसरे को मिलते नहीं, दोनों एक्सपेक्ट करते कि मेरे पास आना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पास जाते नहीं. ईमेल पे एफिडेविट शेयर होते हैं, ईमेल पे ड्राफ्ट शेयर होता है, वो कोर्ट में चले जाता है और बाद में जब केस का रिजल्ट अगेंस्ट में आता है तो डॉक्टर को रियलाइज होता है कि ये नहीं, ये लिखना चाहिए था. सो बेस्ट डिफेंस, आइदर यू इन्वॉल्व योरसेल्फ in every cases of your own or have a medico legal expert with a background of medicine. कि आपके पास टाइम नहीं है कि डाइक्लोफेनेक का रिएक्शन आ गया, एनाफिलैक्टाइड शॉक आ गया, तो उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या था, साइड इफेक्ट क्या था, इन चीजों के लिए एडवोकेट को आपके पास नहीं जाना पड़े, आपके मेडिको लीगल के पास जावे. He is there to explain everything to the advocate, or he himself is making a draft and giving to the advocate, are going to save your not only your time but patiently it can bring a positive result to you. So third important difference, अगर आप अपने नर्सिंग होम के केसेस में, क्योंकि नर्सिंग होम में 90% आपके ऊपर लायबिलिटी आने वाली है, आपको तो डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया लीगल एडवाइजर आपके हॉस्पिटल के लिए चाहिए. जब आप लाखों करोड़ों कमाते हो तो कुछ 1000 रुपए आप खर्चा करने की तैयारी रखो, क्योंकि आप वो 1000 नहीं खर्चा करोगे तो पीसफुल नहीं रहोगे और एक केस में आपके करोड़ों रुपए जा सकते हैं. मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ कि अपर लिमिट चली गई है कोर्ट में, अपर लिमिट चली गई है. मैं उसका रीजन बता रहा हूँ कि वेरियस जजमेंट ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट. आज की तारीख में आई हैव गॉट अ केस ऑफ 30 करोड़ रुपीस इन सिजेरियन डेथ. आई हैव गॉट अ केस ऑफ सिंपल इंजेक्शन एब्सेस लीडिंग टू डेथ बाय सेप्टिसेमिया, जो कॉमनेस्ट है हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि इंजेक्शन तो सब बंदा देता है. 28 करोड़.
5 crore, 10 crore are the common cases which is happening nowadays. Friend, we have reached to that stage in this country. Reason, 80 crore population of this country is below 35 years age group. They are the master in internet. They know their remedies. And this 80 crore population is treating themselves as a consumer. And they are the decision maker of the house. आज मेरे घर में 25 साल का मेरा बेटा या मेरी बेटी डिसीजन लेते हैं. डॉक्टर के पास भी पेरेंट को लेके जाना है तो वो डिसीजन लेते हैं. सादा एक वॉशिंग मशीन लेना है तो वो डिसीजन लेते हैं. द डिसीजन मेकर हैज चेंज्ड and they are the consumers, and that's the reason why litigation in country when respect to medical negligence has increased in multifold. And the best defense to my nursing home people and individual doctor to have a professional indemnity policy. Friend, आपके पास होगी, blessed हो, नहीं होगी तो आज ही आप सोचो निकालने के लिए. मेरा एक humble request है, क्योंकि the time has now reached where UK, USA have investing huge money on insurance. Now time came that in India, being a developing country, reaching to developed country stage, needs such a thing in a country as a protector. We are so lucky that peanut amount premium देना पड़ता है. Peanut amount. मैं आपको सच्ची बताऊं तो 500 रुपए और 1000 रुपए भी महीना नहीं है. मतलब 10,000 रुपए और 12,000 रुपए में करोड़ों की पॉलिसी हमारे कंट्री में मिल जाती है हमारे प्रोफेशनल को साल भर के प्रोटेक्शन के लिए. आपके एक ओपीडी का पैसा, एक दिन का भी खर्चा नहीं है. रोज के 3 रुपए से 5 रुपए का खर्चा आपको अपने डिफेंस के लिए एक कटिंग चाय से भी कम है, एक सिगरेट से भी कम है. और नहीं करते होगे तो इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पेइंग. हम बोलते हैं ना मेडिक्लेम पॉलिसी, जब बीमार होकर एडमिट होते हैं 10 साल में एक बार तो आपको मालूम पड़ता है सारा प्रीमियम रिकवर हो गया. इंडेमनिटी पॉलिसी इज लाइक दैट. बट यस, caution, very important caution. With my practice in a medical law from last 16 years, I found that we are still adopting the old indemnity policy, which is with my doctors. If you have got an indemnity policy with you, please go and read the clauses. We are still getting older policy. Underwriter ने जब लिखा था 1991 में, वो आज भी एग्जिस्टिंग में है. जो सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है उसके अंदर एक्सक्लूजन क्लॉज आप पढ़ोगे तो आज के सारे तकलीफों को एक्सक्लूड किया गया है. मींस दैट पॉलिसी इज एज गुड एज वेस्ट टू यू. And that is a reimbursement policy. Reimbursement का मतलब क्या हुआ? First you pay from your pocket and then insurance company is going to make you good. और insurance company ने reject कर दिया तो then you become helpless. But now customized policies are available. I fought it with multiple insurance company. I gone to multiple authorities to make a good policy for the doctor, and I'm proud that for my doctor I could able to do a justice. So Doctors Risk Medico Legal Services is the only organization in the country which offers such a policy to you. You can compare anywhere in the country. And what policy? It offers a policy which covers all cosmetic domain. कोई भी policy cosmetic cover नहीं करती, क्योंकि cosmetic का growth पिछले 15 से 20 सालों में हुआ है. लेकिन by default we are already in a cosmetic treatment. So this is the only policy which covers all cosmetic domain. This is the only policy which covers total legal fees across the country. 10,000 rupees देने के बाद साल का अगर आपको पूरे हिंदुस्तान के एडवोकेट मिल रहे हैं, डॉक्टर रिस्क के खाली खुद के एडवोकेट हजारों कंट्री में है. हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एडवोकेट्स हैं. किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम आर्ग्यू कर सकते हैं. वहां के एडवोकेट भी अगर आपको सिर्फ 10,000 रुपीज पे करने में मिल रहे हैं, आई थिंक दिट इज वन ऑफ द बेस्ट डील फॉर यू. डॉक्टर्स रिस्क मेडिको लीगल सर्विस की इंडेमनिटी पॉलिसी के अंदर सारी लीगल फीस कवर्ड है. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट फर्स्ट टाइम ब्रॉट अंडर द पॉलिसी ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि डॉक्टर का रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है. कैशलेस प्रोविजन हैज बीन ब्रॉट अंडर द पॉलिसी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा डॉक्टर 50 लाख रुपए वन शॉट नहीं भर सकता. तो मैं लोगों से डिस्कस करके वी हैव ब्रॉट द पॉलिसी where if at all court gives the order, insurance company will directly pay to the claimant, where you will not come in the picture to pay that amount first. So cashless. Not only that, for appeal के लिए 50% भरना है, insurance company will take care of. One of the best policy. It covers latest technology, teleconsultation. It covers second opinion. It covers online consultation, every aspect. Not only that, one of the best thing, it is not only for one doctor, it is for every pathy doctor.
We have brought that also after discussing with the insurance company कि all the RMPs, registered medical practitioner, must be given a policy to them. Registered medical practitioner का मतलब वो वो CCIM के साथ registered हो, CCH के साथ registered हो या MCI के साथ registered हो. So all the paths who are registered with the government body must be given a certain policy. It's been allowed. Not only that, friend, not only that, the policy which is in front of you is discounted. Discounted means जितना आप भर रहे थे उससे कमी, क्योंकि हमने उस चीज का भी केयर किया कि एडिशनल फीचर ला लिया तो हमारे डॉक्टर्स को टैक्स नहीं हो. अगर आज एनेस्थेटिक की पॉलिसी जो कंट्री में अवेलेबल है, आप जाके पॉलिसी बाजार पे देखना, या प्लास्टिक सर्जन की जो पॉलिसी बाजार पे जाके देखो जो 36,000 में अवेलेबल है, 30,000 प्लस जीएसटी 1 करोड़ की, वो आपको 22,000 में अवेलेबल है. 36,000 कहाँ और 22,000, ह्यूज डिस्काउंटेड प्राइस. जनरल सर्जन की पॉलिसी, ऑल जनरल सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट हुआ, पेडियाट्रिक सर्जन हुआ, एनीवन इन दैट कैटेगरी, जिनकी पॉलिसी आज भी 24,000 की, 1 करोड़ की, आप अपनी पॉलिसी पे जाके रेट देख लेना, 24,000 की पॉलिसी आपके पास होगी, 1 करोड़ की वो पॉलिसी आपको अवेलेबल है 18,000 प्लस जीएसटी में. इतना डिस्काउंट भी देके सारे फीचर्स के साथ में कोई पॉलिसी देगा नहीं. And that we have done because my doctor were exploited in that corner also. The policy which covers out-of-court settlement, which covers cashless, which includes legal fees, which includes medical legal service, which includes cashless and 1:1. 1:1 का क्या मतलब हुआ? आप 1 करोड़ की पॉलिसी लेते तो एक केस 1 करोड़ का हो या 10 केस आपके 10-10 लाख के हो या 20 केस 5-5 लाख के हो, सारे कवर्ड है. ऐसी पॉलिसी कोई नहीं देगा फ्रेंड. जब ऐसी चीजें आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज गो विद दैट. यस, बहुत सारे डॉक्टरों ने बोला मेरे को कई सेशंस में कि सर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी, हम क्या करें? आंसर इज वेरी क्लियर फ्रेंड. इफ यू गॉट वन पॉलिसी विथ यू, यू टेक अनदर पॉलिसी. 2 पॉलिसी अगर आपके पास है, दोनों इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर दो तो योर कवर गेट डबल्ड एज पर आइडिया रूलिंग. मतलब ये 50 लाख से ये 50 लाख से दोनों मिला के 1 करोड़ हो गया. मेरे सर्जन को एडवाइस है 1 करोड़ के नीचे पॉलिसी नहीं रखें. मेरे जनरल प्रैक्टिशनर जिनकी पॉलिसी 6,000 रुपए में अवेलेबल है साल के, 500 रुपए महीने में, 500 रुपए महीने में पॉलिसी अवेलेबल है, 6,000 रुपए में 50 लाख एंड 1 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं. ऐसे जनरल प्रैक्टिशनर एमबीबीएस हो गए, बीएमएस हो गए, बीएचएमएस हो गए, बीडीएस, ये सारे कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ. डेंटिस्ट्री को भी बात कर रहा हूँ मैं, ऑल डेंटल सर्जन ऑल्सो. इन डेंटल सर्जन तो सर्जन कैटेगरी में आते हैं, तो सर्जन कैटेगरी के लिए भी डिस्काउंटेड है. इन सब की पॉलिसी जो 6 और 8,000 रुपए साल के अवेलेबल है, please go and do that. My humble request, that friend, and that to be, it is not doctors who is giving a certificate. It is the insurance company, that to be government insurance company, one of the biggest insurance company of the country. Government insurance company का certificate आपके नाम पे आपके पास आता है, जिसमें सारे terms condition जो आपसे बात कर रहा हूँ government insurance company लिख के देती है. ऐसी पॉलिसी आपको कंट्री में नहीं मिलेगी. तो किसी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में या सिविल कोर्ट के एक्शन के अगेंस्ट में जहां आपके ऊपर कंपनसेशन आने के चांसेस हैं, देखो एक भी केस आ गया तो तकलीफ में आ जाओगे. प्लीज 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 टेक इंडेमनिटी पॉलिसी. यानी प्लस पॉइंट है. थर्ड, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मेडिको लीगल सर्विस कवरेज. मेडिको लीगल सर्विस कवरेज का मतलब क्या हो गया? जो इंडेमनिटी पॉलिसी में कवर्ड नहीं है. कहने का मतलब प्री लिटिगेशन. प्री लिटिगेशन, कभी आपके पास पेशेंट आके पेपर मांग रहा है तो समझ लेना पोटेंट लिटिगेंट है. आस्क योर मेडिको लीगल एक्सपर्ट, डू योर ऑडिट ऑफ आईपीडी ओपीडी पेपर. आईपीडी ओपीडी पेपर नर्सिंग होम के केसेस में सबसे बड़ा डिफेंस मेडिकल रिकॉर्ड है फ्रेंड. आई एम गोइंग टू टॉक ऑन मेडिकल रिकॉर्ड. इसके बाद मैं मेडिकल रिकॉर्ड पे बात करूंगा जो आपके लिए बहुत बड़ा डिफेंस है. कंसेंट क्या होता है, कंटिन्यूएशन शीट क्या होती है, टीपीआर चार्ट क्या होता है, नर्सिंग होम में किस तरह से केसेस में. आई एम गोइंग टू टॉक ऑन दैट, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ मेडिको लीगल सर्विस. मेडिको लीगल सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ है तो बहुत सारे केसेस में जहां इंडेमनिटी नहीं आती या केस कोर्ट में जाए ही नहीं, इसका अगर आपको चाहिए तो यूनिट टू हैव मेडिको लीगल एक्सपर्ट विथ यू. मेडिको लीगल सर्विस सपोर्ट सिस्टम जो डॉक्टर्स पॉलिसी के साथ अवेलेबल है, उसके अंदर क्या है फ्रेंड? ऑडिट ऑफ योर आईपीडी ओपीडी पेपर. प्री लिटिगेशन है, एक्सचेंज करो टेक्नोलॉजी पेपर. अक्रॉस द कंट्री टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. डू योर आईपीडी ओपीडी का ऑडिटिंग एंड देन हैंड ओवर टू द अथॉरिटी. आंसर इन टू द नोटिस. नोटिस आ गया, इस तरह से आंसर करो कि कोर्ट में नहीं जावे.